अस्सलाम वालेकुम and welcome to Vantage Developers Presents Game On है. मैं हूँ रोहा नदीम. We are back with another post show. Even at this hour of the night, cricket doesn't let you sleep. The ICC Men's T20 World Cup 2024 is on in full swing और हम वापस हाजिर हो गए हैं with all the post match analysis. हमने मैचेस से पहले भी जो शो किया था उसमें हमने rivalries की बात की थी and that's what we'll be focusing on in today's episode. We will look at the rivalries that were on display today in both the games. लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात हम करेंगे. जब भी हम देखते हैं इन दोनों टीम्स को आमने सामने किसी भी फॉर्मेट में तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है वो टॉप टियर होती है और आज भी हमने यही देखा कि दोनों टीम्स ने अपनी भरपूर जो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, फुल स्ट्रेंथ टीम है, उसके साथ वो सामने आए. बट इन द एंड ऑस्ट्रेलिया डिड व्हाट ऑस्ट्रेलिया डू. Especially in World Cups, we will take a deeper look at what happened in the match. But what a show from Australia. They've once again shown कि वो एक बहुत well-rounded side है. And England थोड़े से undercooked हैं जैसे कि वो last World Cup में भी नज़र आए. अभी तक जो 1.5 game उनकी हमने देखी है उसमें a lot of questions. If you're an English fan, then you must be a bit worried right now because England don't look like they're in a good spot. We'll talk about all of that, but first, let me congratulate my co-host Erin Holland, who's here all the way from Australia. Erin, you must be pretty used to this feeling. How does it feel to consistently do good in all World Cups and get all those trophies? Well, it feels good to actually have something positive to talk about considering it's 2 a.m. here. It's definitely going to be an easier post-show now that we have another awesome win to the Aussies to look forward to. As an Australian, we love to beat England. It's our arch nemesis. Ashes rivalry lives on, and I could just feel myself seething when at one point when Phil Salt and Joss Butler were going, I was like, oh, say it isn't so, say it isn't so. That Barmy Army was in full voice. But once again, the Australians, they find a way to win. We know how to win at this highest level and in World Cups of all sorts. I don't know what it is. I think Adam Zampa once again has the golden arm. When he plays well, Australia so often plays well in the white ball format, and you know we've just got class in all aspects of what we do, whether or not it's that fast bowling cartel of the terrifying three, as we like to call them, plus Adam Stoinis, who was fantastic today, Adam Zampa with the golden arm, and then you know that sort of firepower at the top of the order. Great to see David Warner back in the runs as well. So much talk about whether or not it would be the last time that he will play England. But yeah, a lot to look forward to in this World Cup from the Aussie side as well as the English side. We'll take our guests' opinions. We've got our very own Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammad Yusuf, the regulars on Vantage Developers Presents Game On hai. Martin, I'll start with you because we saw what happened earlier in the day between Afghanistan and New Zealand. We were prepared for any kind of game. But when it comes to both these sides, England and Australia, the rivalry just makes the match all the more interesting. Do you think this was an even-Steven game when it came to batting? Because there were parts in the game where England were pretty much in the driver's seat. They had a great start with the bat, with their openers, but then they just lost their way. Yeah, I think you give credit to the Australian bowlers for that as well. As soon as Adam Zampa came on, he changed the game. He took 2 quick wickets. With getting both the English openers out, so he brought them back into the game. And then I think if you look at the Australian batting, they had partnership 70 off 5 overs, 65 off just over 8 overs, and then they had 2 really important cameo partnerships of 32 off 17 balls and 27 off 15. They really just didn't let up at all against the English bowlers and really took the game away from them. You know, 200 in a World Cup game in a T20, it's pretty tough to chase down. And then Australia came out and just bowled very, very well after a fast start from England. Some serious scoreboard pressure there from the Australians. And Hafiz, I come to you because of a conversation we were having just a few moments ago. England, they bowled so well bowling Moeen Ali up front as a spinner, and then they threw Will Jackson, who's not a frontline spinner, that 1 over too many, and that scoreboard pressure of 22 off that over just really threw the momentum back in the Aussies' favour. Well, definitely. Also, sorry to cut you here, but I'm sorry. It's okay, sure. थोड़ा सा slip हो गया, 2 बज रहे, सवा 2 हो रहे, तो थोड़ा flow में जो है वो मैं नाम आप जो कह रही हैं सच बड़े लेजेंड हो गए हैं। आप जो कह रही हैं, आपने जो कहा सच कहा। मुझे बाद में
करेक्ट किया गया, so जाता my है। apologies. कोई मसला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई मसला नहीं है। Sorry. ये डबल हो गया यहाँ पे। Anyway, coming back to the game, I felt that's what they wanted. Australia, they wanted to gain the momentum, and how nicely it's been presented by the captain. Like Moeen Ali is your proper bowler. If he bowls the first over, I'm okay with that. But you're bringing a non-regular bowler, and you're not trying with your proper gun bowler, which could be Mark, which could be Chris Jofra. Jordan, which could be anyone like Jofra. But I think it was a mistake. They should not have taken that option. But you know, that's given the momentum to them. But how nicely, you know, yesterday we were talking about, like, that's what I strongly believe it will come a day that the players will start playing for a team, not for their milestone. This whole game is without a 50, but they given us the great entertainment. And there were certain moments where the players were more impactful rather than for their own, they playing for their own 50s or 100 or something. So I think this is something very nicely. These two batters, Head and Warner, basically set the stage for the rest of the batters, and how nicely they given that foundation with a great momentum, and then carried by some of the middle order batsmen, because I was worried about once they got out, because in the 7th over, in the 8th over they got out, and then you know the next batter they tried their level best to maintain that momentum. Now that is a very important thing. That's what they did as a team. They managed to get, I think, more than par runs on this track, and I think England was not good on the park at the moment. Yes, they went after nicely, but then again some of the middle order batsmen they couldn't continue that momentum. And Yunus, once again, Spinner. Spinners doing the damage. Adam Zampa, we know what he can do. They were off to an absolute flyer. Joss Buttler and Phil Salt. Enter Zampa, wicket first ball. बिल्कुल, लेकिन मैं तो मेरा बड़ा बिलीव है स्पिनर्स पे. T20 फॉर्मेट में जब स्पिनर्स आते हैं और वो आपको विकेट्स लेके देते हैं तो डिफरेंस आ जाता है. और अगर एक टाइम पे हम बात करें तो जिस तरह जॉस बटलर और सॉल्ट खेल रहे थे तो लग रहा था कि शायद इनमें से कोई एक बड़ी इनिंग आती है. और जैसे जॉस बटलर की बात करते हैं हम, तो जॉस बटलर जो है इन दिनों में बहुत अच्छा बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं और फॉर्म भी उनकी अच्छी है और कैप्टन भी है, और वो चाहते भी हैं कि वो बिग हंड्रेड्स करें और टीम को जिताएं. और आज इस तरह बड़ा अच्छा मौका था. लेकिन जब स्पिनर्स आपके पास होते हैं और उसके बाद जब ऐसी फील्डिंग होती है तो रिजल्ट ऐसे ही होते हैं. तो मेक श्योर करें, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मोमेंटम की हमने बात की है कि आपको मोमेंटम को उसको वैसे रखना है. अच्छी बात है कि यहाँ मैक्सवेल के रन्स हुए हैं, जो अच्छा पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि ये एक मिसिंग पार्ट था कि चला टीम डेविड तो रन्स कर रहे थे, लेकिन एक जो उन पे ज़्यादा एनएसआर कर रहे थे टीम ऑस्ट्रेलिया कि मैक्सवेल के रन्स नहीं थे. तो आज मैक्सवेल के रन्स भी आए और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह कंट्रीब्यूशन होती है टूवर्ड्स टीम की विनिंग में. और फिर जिस तरह उनकी बॉलिंग है, और अच्छी बात यह है टीम ऑस्ट्रेलिया की उसकी उनके पास सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो बॉलर्स में भी लीडर्स हैं, उनके बैटर्स में भी लीडर हैं. तो मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन, और मुबारक हो आपको ऑस्ट्रेलिया को कि उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया. और जिस तरह ये जा रहे हैं आगे तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि एक और ट्रॉफी जो है वो इनके हाथ में है. Bilkul, Australian among us is pretty happy right now, and of course rightly so. Let's take a look at the match summary and relive what happened out there in New York. Thankfully we did see a full game, but Australia were put into bat and they ended up with 201 on the board, and every batter in that order chipped in. Warner being the top scorer, 39 of 16 for him, and then the captain Mitch Marsh with 35 of 25. Travis Head with 34 as well, and Stoinis putting up another show with the bat, 30 of 17 for him. Bowling में अगर आप इंग्लैंड की देखें, क्रिस जॉर्डन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर रहे हैं, लेकिन लिविंगस्टन ने भी एक विकेट ली, मोइन अली ने भी विकेट ली, एंड जोफ्रा आर्चर जिनको हम कब से वापस एक्शन में देखना चाह रहे हैं, he also picked up a wicket. England with the bat started off pretty decently, 54 runs in their power play thanks to Butler and Salt at the top, and of course Moeen Ali, like in somewhere losing wickets back to back. They lost track of the required run rate, and well, thanks to Pat Cummins, Adam Zampa for those brilliant spells, and of course Stoinis also picked up one wicket, and Hazelwood ended up with a wicket as well. And a good all-round show from Australia in the end, getting England to not come close to that total and winning the match by 36
runs, a convincing win from them, and of course that puts them at the top of the points table. 4 points के साथ ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप पे हैं जी, 2 में से 2 जीत चुके हैं, नेट रन रेट भी उनका भी ठीक नज़र आ रहा है, बट इंग्लैंड थोड़े ट्रबल में है क्योंकि याद हो आपको पहले गेम से उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिला because of the rain. They had to share points with Scotland, but now that negative net run rate is also going to be troubling them. But points जो हैं इस वक्त उनके पास नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट है. Scotland is also up there, so this is what the situation looks like right now. We can't wait to see what Australia do and how much more difficult Australia will make things for the other teams in the group. But Mari, from what we saw over here, do you think now England will, because now they've dug a hole for themselves and now it might be difficult for them to make a recovery, especially that first game is going to hurt them a lot, not having 2 points from that first game? Yeah, it makes it difficult, but we know that England are a quality side and they can get the wins that they need to hopefully qualify, but also they just got to hope there's no rain about, because if there is another rain out and Scotland win one more game, they're out. You know, that's going to make it tough. You know, we know the Caribbean can be a little bit temperamental with its weather, you know, very tropical, rain can come and go quite easily and can be quite disruptive. But look, if they do get full games in, you know, they play Oman and Namibia to come, is that right? Yeah. 2 games that they should win. But we've seen how the underdogs in this tournament have gone against the big nations. So, you know, who knows, there could be a little upset in the mix. Who knows? I mean, rain already showing the ramifications of that washout between Scotland and England. Crazy to see the defending champions so low in their pool. But, you know, casting our mind back to the beginning of the innings, Australia, they were sent into bat on what has been a tricky Bayesian wicket, it has to be said, for a lot of this competition so far. David Warner, we spoke at the beginning of the match, I have to say, about the fact it might be the last time we see him play England, and if it was, the fact that he's came out with 39 of just 16 balls with a circumspect first over, it has to be said, with Moeen Ali, and what a performance by him, and it goes to show, as we always say, that pedigree always rises to the top. Yeah, absolutely. I mean, he's a class player. He's been world class for, you know, pretty much his entire career. He came onto the scene with a big burst against South Africa in 2009, and you know, he's still doing it now. What's that? 15 years later, he's still going strong. So, you know, he's a big player for Australia, and you know, the longer that he bats, the more runs that he scores. You know, it can only be good for Australia moving forward. And you see here, he just missed his line in this over, didn't he? I think, and he got hit for a couple of sixes down the leg side. And David Warner, yeah, he said before the game, the key to facing Mark Wood and Jofra Archer was to use the pace, and we saw in the previous 6 there, just flicking it off his hip over fine leg, and he just managing to get under a low full toss and hitting that away. Class player, you know, Australian born, loves playing off the back foot, a short man, and he just dominated, didn't he, and put Australia into such a strong position early that England were on the back foot straight away. Disappointing that he got out when he did. One of those innings that you just thought, I mean, the roof was the ceiling for him, but a wonderful performance and a selfless performance in the end. They had the momentum and they wanted to continue with it and go towards that really large total of 200 plus, which was on offer pretty much from the second over onwards. Right, and very well supported by his partner on the other end as well, Travis Head. Yunus, World Cup से पहले जो कुछ coverage वगैरह हो रही थी, तो रिकी पॉन्टिंग, the great रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया कि प्रेडिक्शंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ट्रैविस हेड जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर होंगे. क्या आपको भी उनसे इसी तरह की सिमिलर उम्मीदें हैं? बिकॉज जिस तरह डिस्ट्रक्टिवली वो पेस करते हैं अपनी इनिंग्स को, जिस तरह वार्नर को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि पावर प्ले को यूटिलाइज जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया करते हैं उसमें जितना वार्नर का हाथ है, ट्रैविस हेड भी अब उसी बेंचमार्क पे आके खेल रहे हैं. बिल्कुल, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप दूसरे को, और बाजू का था ये ऐसा होता है कि एक बैटर जो है वो थोड़ा टाइम ले रहे होते हैं, दूसरे बैटर थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे रखा होता है पैर उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. और मैं डेविड वार्नर की बात करूँ, खास ट्रैविस हेड की मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसे बैटर हैं जो कि बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर फास्ट बॉलर्स आएंगे तो उनके खिलाफ ये रन्स करेंगे. ये बिल्कुल डेविड वार्नर की तरह है. अगर स्पिनर आ जाएंगे, जिस तरह देखें रूम बनाते हैं और इनके पास शॉट्स पिच के चारों तरफ हैं, तो ये इनकी अच्छी क्वालिटी है. और जिस तरह इनकी ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और ख़ास तौर पे जो इनका इंटेंट है, ये सिर्फ बिग बाउंड्रीज के लिए नहीं जाते, ये बॉल को टैप करते हैं, सिंगल लेते हैं, उसके बाद कट शॉट हो, पुल शॉट हो, ड्राइव हो, स्लॉग स्वीप हो. तो मेरे ख्याल से ये ऐसे बैटर हैं. और
मैं बड़ा फर्म बिलीव हूँ, जब आप ज़्यादा सारे फॉर्मेट खेल रहे होते हो तो आपके पास इस कंडीशन में या कोई भी गिवन कंडीशन हो, मुश्किल हो, तो उसमें आपको खेलना आता है। तो जैसे ये वार्नर की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, मिचेल मार्श की बात करें, उसके बाद नीचे जितने भी मैक्सवेल की बात करें, इनके पास एक ऐसी बैटरी मौजूद है जो कि सारे फॉर्मेट आलमोस्ट खेली हुई है। उनको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। और फिर जब मैं अपोजिट देखता हूँ बाज़-औक़ात, जब आप एक फॉर्मेट में एक्सपर्ट होते हो और एक ही फॉर्मेट खेल रहे होते हो, एक ही अंदाज से खेल रहे होते हो, तो बाज़-औक़ात आपको एज अ बॉलर एज अ बैटर प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं जब ट्रेविस हेड की बात करता हूँ, डेविड वार्नर की बात, ठीक है, अब ये डेविड वार्नर वो अब एक फॉर्मेट की तरफ आ गए, लेकिन मैं उनके कैरियर की बात करूँ तो बहुत सारी फर्स्ट क्लास, बहुत सारी टेस्ट क्रिकेट, बहुत सारी 50 ओवर की क्रिकेट उनके बैक पे। तो इसलिए जब हमने पिछले मैच में भी देखा कि डेविड वार्नर ने मुश्किल सिचुएशन में ऑलमोस्ट रन बॉल की, लेकिन वो डिमांड थी उस वक्त सिचुएशन की। तो मेरे ख्याल से ये अलग करती है दूसरी टीमों से को ऐसी टीमों से। Bilkul. And I think the fact that those two lefties at the top of the order were absolutely targeting that short side, the wind was in their favour. England didn't really have any answers, unfortunately, for them until they figured out by taking the pace off, bowling those cutters, bowling a little bit back of the length, they started to make inroads. But unfortunately, Hafiz, it didn't get any easier for them because in stride for captain Mitchell Marsh, he dug deep. He navigated the difficulty of the field being out after the power play, and he had a beautiful innings of 35 off 25. So Australia didn't take their foot off the pedal at all once the middle order came in. That was a good innings, but you know the contribution made by some of the middle orders. Basically, the momentum they already got, and then they continued with the momentum is special, because sometimes as a player you feel like I need a little bit more time to get settled, but they kept the runs coming for the team, and that's what they tried to play their shot. And I think they managed the target very well in their head as a team. They knew like what total they must have on the board to challenge England. So as a team, I think they got that total what they wanted to, but the contribution not only from Mitchell Marsh. If you see the contribution of Matthew Wade at the end, that was also special. Like, you know, he added those 17 runs, which basically given them that total which they wanted to. So I think overall it was a good show for Australia. They batted well, they fielded well, and at one stage, once they were a little bit under pressure because of the reply from the opener, they came back very well. The way Zampa bowled and the way some of the fast bowlers after first 6 overs, they came back. Cummins is one of those. He hit the right area. He was bowling in the right, because in Caribbean sometime you need to understand that the wind play a major role in your bowling, in your batting. So you need to understand which are the areas I have to bowl with the wind and against the wind. So this is something they managed today really well. Yeah, it was a real all-round performance from the entirety of the Australian side. We're off to a very short break here on Vantage Developers presents Game on Hay, but do not go anywhere, because we also saw an absolute epic between a couple of other sides. That was the Netherlands, and they were taking on the mighty South Africa. Plenty more to unpack about all the matches we've seen so far today here, but we'll see you in just a few short moments. Appreciate your company sticking with us here in the early hours of the morning. Of course, you're watching Vantage Developers presents Game on Hay, and I've got a big smile on my face because Australia have defeated England over in the Caribbean. They were in Barbados, and it was a 36-run emphatic victory over the defending champions England, who find themselves in a spot of bother in their group at the moment. Only 1 point to speak of after 2 games. Of course, Roha suffering a washout to Scotland before this loss. Yeah. Looking a little precarious for the defending champions now. Well, that's a film I've seen before, Erin. I know how it ends. As Taylor Swift said, I think I've seen that film before, but I think England will be looking at the positives from this match. We will, of course, discuss what went better for England than it did in the last game, but
Let's take a look at their fall of wickets, Marty, because Australian pace attack and then supported by Adam Zampa. You faced these guys a fair amount of times. You know what makes them so threatening. The kind of start that England got in that power play, and then Adam Zampa coming in and just unsettling their whole plan. And then, of course, there wasn't a recovery after that. There was no partnership. Is this something that Australia will be looking to persist with for the remaining games? Because the World Cup now moves to the Caribbean, where Zampa will be all the more destructive. Yeah, it's something that Australia really pride themselves on, is their pace bowling battery, and then the way that Adam Zampa's come on in the last probably 5 years. His bowling has just gone to another level. And we see here, he gets the breakthrough. Not really sure what Phil Salt was trying to do there. It's probably not the length to be doing that. But credit to Zampa, he persevered. We know that Joss Buttler is a great exponent of the reverse sweep, and unlucky to get out there. Great catch there from Mitchell Starc to get rid of Will Jacks. Stornis chipping in with one there. Slower ball, wide slower ball, and Johnny Bairstow just trying to hoik it across the line, finding Maxwell in the deep. Great bowling from Hazelwood there. And then we see Cummins coming in, and Moeen Ali just slicing it to deep cover, looking to go downtown, couldn't get it where he wanted to. And then again, another wide slower ball that finds Mitchell Starc in the deep. But Australia just didn't let up. You know, they kept on keeping on. That's what they do. They never let you get away. Especially after a fast start, you know, they really came back and they really pounced. As soon as they smelled a little bit of blood, they pounced and just never let England get another partnership going. Yeah, and it was a good partnership, though, it has to be said, when England came out to try and chase down that huge scoreboard pressure total of 201, I believe it was. But Joss Buttler and Phil Salt, if someone was going to do it, it had to be a big partnership up the top. And Eunice, they did do a good job to start. It was a really strong power play by them, and we're going to relive Joss Buttler's innings because it was an impactful one at the top of the order, as it so often is for him. 42 off 28. What did you enjoy about the wonderful innovative batting that he always brings? जब आप चेस कर रहे होते हो ना, तो ये जो 30s 40s की हम बात करें, पहली इनिंग में तो ठीक है, चले मोमेंटम आप एक बिल्ड कर रहे हो और आप 200 रन कर देते हो, लेकिन जब आप चेस करते हो, जॉस बटलर की अगर मैं बात करूं खास तौर पे पावर प्ले में, उनको शुरू में रन्स नहीं मिले, वैसे सॉल्ट ने आगे से एक्सीलेटर पे पाँव रखा, लेकिन जब फिर उन्होंने क्रीज को यूज़ करना शुरू किया और पेस अपने लिए उसमें आगे आए और उन्होंने बनाया अपने लिए, और फिर जहाँ जहाँ उनको बॉल्स मिली तो उन्होंने खेला, कवर के ऊपर से भी खेले हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे जो मिड विकेट का एरिया है वो उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया, क्योंकि वो अपने स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और उनका बैट स्विंग पे वो खेलते हैं, और जहाँ जहाँ उनको फिर मिला उन्होंने वो किया। लेकिन मेरा बिलीव यही है कि जब आप चेस करते हो तो आपको ये 30s 40s और 50s होते हैं, ये बाज़-औक़ात आप पीछे रह जाते हो। अगर यही जॉस बटलर जब वो आउट हुए हैं और क्योंकि बैक टू बैक विकेट्स गिरी और एडम जंपा ने उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक टून सेट की, अगर ये 20 से 25 रन और करते और ये स्टैंड देते तो देखें जो उनका आस्किंग रेट था वो ऑलमोस्ट वहीं पे थे, लेकिन बीच में जब बैक टू बैक आउट्स हुए तो वहाँ से वो बैक पे आए। अगर यहाँ पे जॉस बटलर एक 70-80 रन की इनिंग खेलते और उनके अराउंड बाकी बैटर्स खेलते तो मेरे ख्याल से ये टफ करते बॉलिंग के लिए, और ये जो है ये इनको एक अच्छा चांस था कि ये चेज़ कर सकते। लेकिन चेजिंग में हमेशा पॉइंट ये है कि जो बैटर भी 30-35 रन करें वो स्टार्ट लेते हैं तो उनको चाहिए कि वो फिनिश तक की तरफ जाए और आखिर तक खेलें। बिल्कुल, और यही बात मैं यहीं से हफीज़ आपकी तरफ आऊँगी कि चेज़ को कंप्लीट करना, हमने काफ़ी दफ़ा इंटेंट की बात की है कि पावर प्ले को यूटिलाइज अक्सर टीम्स कर लेती है। अगर आप पाकिस्तान की टीम को भी देखें तो उसके बाद फिनिश करने की तरफ बैटर्स नहीं लेके जाते। आज बटलर और सॉल्ट ने जो स्टार्ट इंग्लैंड को दिया, अगर हम अभी फिल सॉल्ट की भी हाइलाइट्स देखें, बिकॉज ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम हिम एज वेल, 37 ऑफ 23 बॉल्स, उन्होंने भी बटलर को फुल सपोर्ट किया और इंटेंट क्लियर था, क्योंकि जब आप 200 चेस कर रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यू डोंट हैव टाइम टू सेटल इन। अब 160 के स्ट्राइक रेट पे एज एन ओपनर कितना इंपॉर्टेंट होता है जाते साथ ही ये इंटेंट शो करना, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनको मिडिल ऑर्डर से वो सपोर्ट नहीं मिल सका। देखें दोनों ओपनर ने रिप्लाई तो बहुत अच्छा किया। अगर आप देखें दोनों का जो खेलने का वो जिसको इंटेंट या अप्रोच की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल दे वर गोइंग फॉर द गेम, लेकिन उनके आउट होने के बाद फिल सॉल्ट की जो इनिंग्स है वो एक मोमेंटम क्रिएट किया उन्होंने। जो यूनुस मैंने बात की कि जॉस पहले 15 बॉल में या 14 बॉल में वो इतने ज़्यादा उनकी सिर्फ बाउंड्रीज मिल रही थी, सिंगल नहीं ले सके,
लेकिन इनकी जो बैट से जो शॉट लग रहे थे, ही वॉज फाइंडिंग द गैप। तो मुझे ये लगता है कि सारी सूरत हाल को इन दोनों ने तो बहुत अच्छा मैनेज किया, लेकिन जो इसके बाद आने वाले प्लेयर थे वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। अगर आप देखें जो बॉल्स उन्होंने कंज्यूम किए, विल जैक ने 10 बॉलों पे 10 रन किए। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो लिविंगस्टन ने 15 स्कोर किए 12 बॉल पे। फिर जॉनी बेस्टो जो हैं उन्होंने 7 स्कोर किए 13 बॉल पे। तो आपने तो 5 से 7 ओवर में किए ही कुछ नहीं। तो वही वो मोमेंटम था जो आपको बेस मिल गई थी, फाउंडेशन मिल गई थी, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं नज़र आई। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चले जाएँ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, तो उनको जो वार्नर और हेड ने मोमेंटम दिया, हर प्लेयर ने आके उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया। सो थिंग इज़ के एज ए टीम ये जिस सिचुएशन में आए हैं, ओपनर ने अपना काम पूरा किया, लेकिन जो उसके बाद वाले प्लेयर थे वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर सके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेस के अंदर आपका। ठीक है, यूनुस भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि आपका एक सेट बैटर थोड़ा लंबा खेलता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल रही होती हैं, उसका बॉल गैप में जा रहा होता है, वो वेल सेटल्ड होता है। किसी भी नए प्लेयर के लिए अंदर आके स्ट्रेट अवे उसी मोमेंटम के साथ खेलना, वो 2 से 5 बॉल ले सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो बंदा खेल रहा है, जिसने 10 से 15-20 बॉल खेले हुए हैं, वो मोमेंटम को कंटिन्यू करे और चांस दे या इनफ टाइम दे अपने आने वाले प्लेयर को कि वो थोड़ा एडजस्ट कर जाए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो अगर आपका जो सेट बैट्समैन है वो आउट हो जाए, तो फिर दोनों में से किसी एक ने ज़रूर मोमेंटम चलाना है। ये नहीं हो सकता कि 2 बंदे नए आए और वो ये कहें कि जी हम अपने 5-5 7-7 बॉल सेट होने में लगा देंगे, तो उससे फिर गेम मुतासिर होती है। आज के मैच में ओवरऑल अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम मेंटेन ना करने की कमी नज़र आई। इनके जितने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं दे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो उस मोमेंटम को जो ओपनर्स ने प्रोवाइड किया था उसको मेंटेन नहीं कर सके। वही हुआ कि जब रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 तक चला गया, 15 तक चला गया, दे डिड हैव विकेट्स इन हैंड, बट देन अगेन इट वाज ऑल अबाउट यही प्रेशर होता है ना, जब आपको आपकी तरफ एक टारगेट होता है तो ये प्रेशर ही आपसे फिर मिस्टेक कराते हैं। जब आपके पास एक सेट बैटर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत स्लो खेलें और आखिर तक खेलें, लेकिन जब वो क्योंकि उनके इर्द गिर्द जब आप खेल रहे होते हैं और जब आप चेस कर रहे होते हो तो उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और यही हुआ, 2 नए सेट बैट्समैन आए, 3 बॉलें उन्होंने खेली, 4 बॉल उन्होंने की और आप एक और पीछे हो गए। तो यहीं से फिर अब आप देख रहे हैं कि हम तो ठीक है, अभी 10 रन की हमारी आस्किंग रेट है वो चल रही है, लेकिन जब आप 2 ओवर के बाद देखते हो तो वही 12-13 पे पहुंची, 12 वाली 15 पे पहुंची। तो ये प्रेशर जो है ये आपका मोमेंटम भी तोड़ती है और आप मिस्टेक करते हो। यही इंग्लैंड के साथ हुआ। अगर हम देखें, अगर जॉर्ज बटलर और सॉल्ट आखिर तक खेलते तो मेरे ख्याल से 2 ओवर पहले रन चेज हो जाते, लेकिन जब उनके आउट होने के बाद वही होता है कि जब आपके, यही हम बार बार बात कर रहे होते हैं, कुछ और बैटर्स के लिए भी ये बात कर रहे होते हैं कि जब आपने 40 बॉलें खेलनी और 60 रन किए तो 20 बॉलें और खेलनी है आपने और उसमें 40 रन और करने, तो आपका जॉब डन हो जाएगा। जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कितना वेल प्लान किया ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने इस मैच के अंदर। जो मैंने बात की, जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन आएंगी उसमें आपको विंड और अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप देखें कि जब वो विद द विंड बॉल कर रहे थे तो दे वर गोइंग अवे फ्रॉम द बैटर, ताकि अगर वो मुझे पॉइंट पे तो छक्का मार नहीं सकता, तो वो अगर क्या करेगा सिंगल, एंड इफ़ दे ट्राई टू गो समवेयर एल्स, वो लगती नहीं शॉट। तो मुझे लगता है कि इस पूरी अगर आप बॉलिंग को अगर आप जज करें तो जिस तरीके से पैट कमिंस ने, स्टोइनिस ने, जैम्पा ने तो बॉल अच्छे किए, इन लोगों ने और हेजलवुड ने आके अपने ओवर अगेंस्ट द विंड जो ऑप्शन इन्होंने ऑप्ट किए हैं वो बहुत शानदार। और यही अडेप्टेबिलिटी है। जैसे हम बैट्समैन को कहते हैं कि ही हैज़ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इसी तरह बॉलर ने भी अपने प्लान्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर हवा तेज़ है उसके साथ कैसे बॉलिंग करनी है, उसके अगेंस्ट कैसे बॉलिंग करनी है, ये प्लानिंग उनकी बहुत शानदार है। The thing about the Aussie lineup as well is, yes, some of these guys have been a little bit out of form of late. Some haven't played some cricket because they've been injured. You know, it hasn't been a side that's played a lot of cricket together, as we discussed in the pre-match. But the experience in the side, 11 members of the 15 squad are 30 years and older. And the great Ricky Ponting always said that, you know, T20 cricket is an old man's sport because, Guppy, experience speaks for everything. And the shorter the format of the game gets, almost the more experience Then you need to get to keep a cool Why head. Guppy is with us? He should be in the team. Yeah, he should be in the team. I'd love to be, Eunice. I would love to be. But New Zealand's another side as well, isn't it? A lot of the squad are of 30 years and older. And when it comes to World Cups and the pressure is on, you have to think Australia have so many cool, calm, level heads all throughout the batting and the bowling lineup that just know how to get the job done when the pressure's on. I think that's what makes them such a dangerous side. But, you know, you played against them for your entire career. Hey, what's your perception of the Aussie side?
Yeah, they're a very experienced team, as you said. I mean, they've got guys who have played T20 cricket all over the world. They've got guys who have played over 100 Test matches, guys who are nearing 100 Test matches, played over 100 ODIs. So they have a lot of experience under their belt. They know how to get the job done. They've been in tough situations before, and that all of that experience from before, being in those tough situations, being in, their backs up against the wall, they know how to get themselves out of it. Yeah. They just know the thought process that they need to be able to go, okay, I need to slow things down. Things are going against us, I slow it down, play the game at my pace, and we'll get us back into the game. And I think they do that very, very well. They're a team that keeps coming back, keeps fighting, and they just don't give up. They've done it their whole career. I mean, look at what they've done in World Cups previously. How many one-day World Cups have they got? 5, 6, something like that. Crazy. They just had players they play hard cricket. They play hard-nosed cricket. There's no soft options. They just know how to get the job done. Right, you can count on the Aussies to keep the tournament interesting as well. But it's great to see the high spirits that they've always shown. We saw what they can do with the bat, with the ball, even as far as the captaincy goes. Mitch Marsh bhi thoda sa impressive nazar aa rahe hain. Although on field, Pat Cummins was also had the captain's hat on throughout the game. He was there supporting Mitch Marsh wherever he could and setting the field and doing that so perfectly. But that's great to see about this Australian side. They gel together, they're a complete unit, and as Erin said, the number of calm heads on that team, that's what makes this Aussie side so destructive. Time for a little break here on Vantage Developers presents Game On है, but when we come back, जी Netherlands versus South Africa के बारे में थोड़ी बात करेंगे, because एक और rivalry को हमने unfold होते हुए देखा, where South Africa were victorious this time. So don't go anywhere, stay tuned, we'll be right back. This is Vantage Developers presents Game On Hai, unpacking all of the action we've seen in Pakistan time today in the ICC Men's T20 World Cup. And yes, it was a wonderful victory to the Aussies all the way over in Barbados against England. But a little bit earlier in the day, we saw finally South Africa. 3 times the charm, they managed to down the Netherlands. Let's remind ourselves of what happened with that matchup in New York City. They absolutely wanted to get a win, and a win is exactly what they got. 103 for 9, it was all set up by the South African bowlers. They were absolutely brilliant. Otniel Bartman, well, isn't he having a wonderful rise in international cricket? 4 for 11 of 4 overs, backed up by, of course, the spearhead of the attack, Anrek Nortje, brilliant and unplayable once again. 2 for 19. Marco Jansen, well, 7 feet tall, coming at you with that uneven bounce was so hard to contend with. 2 for 20. Engelbrecht, the only real damage with the bat for the Netherlands with his 40, supported by Van Beek, but 103 for 9. It got off to a rocky start for South Africa with the chase, it has to be said. The bowlers were on fire. Kingma 2 for 12, Van Beek 2 for 21. Did a lot of damage with the ball, but it was Agent Miller. Killer Miller, they call him. 59 not out of 51 balls, supported by Tristan Stubbs, who managed to get South Africa that win by just 4 wickets today. And what does that do to the points table of Group D? Let's take a little look now. South Africa sitting pretty right up the top. They're 2 from 2 with a run rate that is in the positive now with 4 points. Bangladesh, though, they had a victory earlier today, which sees them sitting in second. And the Netherlands, well, they did have that win. It's just Sri Lanka and Nepal yet to put any points on the board. Of course, reminding you the top 2 teams progress through to the Super 8. Roha, what a day it has been, and what a day it's about to be. There's so much action still to come. But that game, that Netherlands game, at one point there, you just thought, not again. The bogey side. They've done it. They've done it. But a day that was all about the rivalries on field, and this will continue into tomorrow as well. I think into today. Sorry, just a few hours from the big rivalry. But we'll talk about that in a bit. Marty, South Africa and Netherlands. We saw what South Africa did in their first game against Sri Lanka. It was
all cruising from there on up to this game, and there was a lot of talk at the time of the toss where we talked about whether South Africa were playing it a bit safe, but in the end they were working smarter, not working harder, I guess. Yeah, I guess if you look at the conditions and what's happening there in the previous games, bowling first was the right option, and it sends a really strong message. You know, South Africa are there to play, there to win, and they've done just that. You know, they had the Netherlands 48 for 6. They'd be a little bit disappointed to let them get out to 100, but at the end of the day, batters are allowed to play well, and you know, a partnership of 54 there between Engelbrecht and Logan van Beek, you know, really got them back into the game. They probably would have wanted a few more runs, but I look, at the end of the day, it almost proved to be enough. But I think if you look at it, David Miller deserves all the praise in the world. He used all of his experience. You know, he's played a lot of one-day cricket for South Africa. He's played a lot of T20 cricket around the world, and he just played it perfectly. You know, he soaked up a lot of pressure, didn't he? You know, it wasn't easy going. They were bowling some pretty nasty balls at him, but he found a way to get through and ended up 59 or 51 and won the game. So for me, this is so far the innings of the tournament. Right. And after a horror start, when Quinton de Kock gets a diamond duck, I mean, it just, oh my goodness, when that happened, I just couldn't believe it. How unlucky was that? Yeah, a little breakdown of communication, but at the end of the day, run-outs happen in cricket. You never want them to happen, but they do. And the South Africans would be disappointed. You know, they were really under pressure early. They were 12 for 4 at one point, and you thought, wow, this is game on. But, you know, Tristan Stubbs, a young man coming in, hasn't played a lot of cricket. Partnership of 65 with David Miller really broke the back of that chase and got David Miller to a position where he could win the game for them. Yunus, आपके क्या thoughts थे? Because South Africa, when they went into bat, they pretty much looked in control because the target wasn't that big of a challenge. लेकिन top 3 जब भी हम South Africa के challenge को discuss करते हैं तो क्विंटन डी कॉक, हेंड्रिक्स और मार्करम, इनके थ्रेट की बात करते हैं. थ्रेट तो आगे खैर बैटिंग में काफ़ी है इनके, बट ये टॉप 3 टॉप 4 इनके बहुत एक्सप्लोसिव है. बट आज इतने चीपली ये आउट हुए हैं, और उसके बाद जिस तरह मिलर, अगर वो इनिंग्स ना होती मिलर की तो कुछ और कहानी नहीं, थी. ऐसा नहीं होना था. देखिए, जब आपके पास आप बहुत ज़्यादा टारगेट चेज नहीं कर रहे होते तो कोई ना एक आध इनिंग्स होती है. जैसे ट्रिस्टन स्टब की और डेविड मिलर की पार्टनरशिप भी 65 रन्स की, तो ये ऐसा तो होना था. हाँ, अगर 120 130 25 रन हुए होते तो शायद थोड़ा मुश्किल होता. लेकिन देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर रही है. शायद वो जो बैक से उनके आ रहा था, और आज भी ऐसा लगा कि जब 12 रन पे 4 आउट हुए तो हमें लगा शायद ये आज फिर क्या हारने चले. लेकिन जैसे डेविड मिलर की आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको. ऑलमोस्ट जो है ना 50 ओवर भी बहुत ज़्यादा खेले हुए. उनको पता है, उन्होंने अपना वहाँ होल्ड किया, और जो उनके एक्सपीरियंस है, जो दुनिया के में खेलते हैं हर जगह, और ख़ासतौर पर क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट भी बहुत खेली हुई है, तो उन्होंने दिखाया कि अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो मेरे ख्याल से अच्छी विन थी साउथ अफ्रीका के लिए, और वो डिज़र्व भी करते थे ये विन करने, क्योंकि उनके अगेंस्ट ठीक है नेदरलैंड के साथ उनके इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो डिज़र्व करती थी. और इसलिए भी कि जब टॉप आगे जाएंगे तो ऐसी टीमें आगे पूल में होनी चाहिए. बिल्कुल. हफीज़, आपने बार बार ये बात की है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं, जो चैम्पियन टीम्स होती हैं, वो अपने आप को चैलेंज करती हैं और अपने आप को हर वक्त अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह के खेलती. डू यू थिंक आज के मैच से साउथ अफ्रीका थोड़ी चैलेंज ज़रूर हुए होंगे? बिकॉज द वे दैट देयर चेज स्टार्टेड, इवन इन द बॉलिंग, जिस तरह की उन्होंने रिकवरी करनी दी नेदरलैंड्स को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, कहीं ना कहीं चैलेंज आज वो ज़रूर हुए हैं. ये चैलेंज तो बहुत ज़्यादा हुए हैं. मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का कहीं पे कोई मैच फंस जाए ना, तो हमारे बहुत प्यार करने वाले फैंस वो सजदे में गिर जाते हैं, वो दुआएं शुरू कर देते हैं. लगता है कुछ दुआएं वहाँ पे भी चली. तो आप सोचें कि 4 आउट थे उनके 14 के ऊपर, और उसके वक्त वो बिल्कुल आउट ऑफ द गेम थे. वो तो एक स्पेशल इनिंग्स है उस मौके के ऊपर, जो अभी हमें बड़ी आसान लग रही है, लेकिन उस कंडीशन, उस सिचुएशन में जब आप बैट्समैन अंदर जाता है और 4 आउट हुए हों और ऐसी कंडीशन में बॉल अप एंड डाउन और सीम अराउंड कर रहा हो, तो बड़ा मुश्किल होता है आपको मैनेज करना. बट डेविड मिलर ने और स्टब्स ने जैसी इनिंग्स खेली बहुत शानदार थी. लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ नीदरलैंड्स को, जैसे वो इनके खिलाफ जिस स्पिरिटेड वे में वो खेलते हैं. हर एक मरतबा जब इनका मैच आता है तो वो एक एक्साइटमेंट लेके आता है, एक ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है कि जिसमें देखने का मज़ा आता है. तो उन्होंने चैलेंज किया बहुत स्ट्रांगली, और मुझे लगता है कि उनके जो उनके बॉलर हैं किंगमा,
उनका जो कंट्रोल था वो बहुत शानदार था। तो मैं जी मुझे लगता है लास्ट वर्ल्ड कप में जो 25 करोड़ आवाम की दुआएं नेदरलैंड्स के साथ थी, आई थिंक वो अभी तक चल रही हैं। इम्पैक्ट दे रही सही है, हैं, सही है। बिकॉज ऑल पाकिस्तानी फैंस वर रूटिंग फॉर नेदरलैंड्स टू विन इन दैट लास्ट वर्ल्ड कप जस्ट सो दैट पाकिस्तान कुड गो जी। थ्रू। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को ये ज़रूर सोचना है कि अगर उन्होंने ट्रॉफी की तरफ जाना है तो अपने आप को एक वन डायमेंशनल टीम बनाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ज़रूर सोचें। मैं ये नहीं कहता कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर इन्होंने पहले बैटिंग की होती और ख़ुद 130 की होता, चैलेंज करते अपने आप को, तो उनको 70 पे आउट कर देते, तो वो ज़्यादा विक्ट्री आपको समझ आती। तो मुझे ये लगता है कि समवेयर साउथ अफ्रीका जैसी टीम या बहुत सी ऐसी टीमें जो बड़ी ट्रॉफीज़ नहीं जीत सकी आज तक, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन के अंदर बाहर नहीं आए, और इसीलिए वो जो चैलेंज करने वाली सिचुएशन होती है, मैं हमेशा मानता हूँ कि एज ए प्लेयर जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं तो आपका बेस्ट बाहर आता है। Well, talking about challenging yourself, Erin, as a player, as a team, that's when you become a champion team. Oh, well, I'll tell you what, if South Africa bowl the way that they bowled yet again in this game, I think they will be a team to challenge for the title this year. And yes, Anrich Nortje was fantastic once again. We know how impactful he can be. It's the rising superstar of Ottniel Bartman, who only playing his 4th ever international game for his country. He ends up, Martin, with figures of 4 for 11 to back up a wonderful performance in the first game of the tournament for South Africa. Yeah, what did you like about what he was exploiting with his lines and lengths on this, albeit tricky, New York wicket? Yeah, he's come on really quickly, hasn't he? I mean, he's not very well known to a lot of people, so you know, there wouldn't be much footage to be able to watch on him. But you know, by all accounts, he had a very good SA20 competition this year, and it deserves a spot. And I mean, what a catch from Marco Jansen, you know, to get in behind his fellow seam bowler. He just really explored the conditions well, bowled some nice lines and lengths. You know, and then at the end of the innings, he took 3 in the 20th over there. So they're trying to really take him down, but he's just, you know, taking pace off, bowling the right areas where it's not easy to hit. So, you know, well bowled to him, he deserves it, and you know, he's looked like he's got a, you know, bright future ahead of him. And the maturity to adapt already on these unconventional conditions that we're not used to seeing. And he's not a young man, I believe he's about 31 years old, but what an impact he's making to his international career. It's exciting to see if you're a Proteas fan, Roha. And what a well-rounded bowling attack they've got, right? I mean, they've covered all of their bases coming into this World Cup. We saw with the bat they have their bases covered for a while now, but with bowling as well. महराज को आज विकेट नहीं मिल सकी यूनिस, लेकिन पेस में जिस तरह वो अटैक कर रहे थे जाके, अगर हम उनकी बाकी कंप्लीट भी फॉल ऑफ विकेट्स देखें नेदरलैंड्स की, तो उससे भी यही पता लगता है कि दे वर इन इट टू विन इट, जिस तरह कहते हैं ना, वो वाला माइंडसेट। तो बैटिंग तो हमें पता है साउथ अफ्रीका की क्या कर सकती है, उनका थ्रेट हम सबको पता है, बट ये बॉलिंग कितना चैलेंजिंग बनाएगी, खास तौर पे जब ऑफ कोर्स कैरेबियन में सुपर 8 अगर ये क्वालिफाई करते हैं, और वहाँ पे महाराज ऑफ कोर्स विल बी सो इनक्रेडिबल। बिल्कुल महाराज है, उनकी भी एक अच्छी बात है कि कोई यंगस्टर नहीं है, वो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट खेलते हैं, और जहाँ मैं उनकी क्वालिटी की बात करूँ तो स्टम्प टू स्टम्प बॉल करते हैं, तो आपके पास कोई रूम नहीं है। और हमें पता है कि T20 में जब आप स्टम्प टू स्टम्प बॉल करते हैं और आपकी लेंथ आप वेरी करते हैं, तो आपके पास बहुत चांस है आउट करने का। अगर मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग अटैक की बात करूँ, ये बार्टमैन के देखें, और ये जैसे ये फील्डिंग सपोर्ट करती है इनको, तो ये अमेजिंग है। तो जब आपके पास आपको पता है कि आपकी फील्डिंग सपोर्ट करे, और ये देखें, ये इनकी अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बहुत सारे स्टम्प टू स्टम्प, और ये देखें जैसे नोकिया की फॉर्म अच्छी आई हुई है, वो जैसे ही बैट्समैन ने उनको रूम दिया, उन्होंने उनकी बॉडी को हिट किया और उसमें उन्होंने आउट किए। तो और फील्डिंग जहाँ बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाजुकात ये होता है कि अगर ये फील्डिंग नहीं होती, एक आधा कैच नहीं होता, और कहीं से कोई इधर उधर से 15 से 20 रन हुए होते, तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीकन और मुश्किल में होते। तो ये जो हम बार बार बात करते हैं कि जो T20 क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट ओनली बैटिंग और बॉलिंग, इट्स आल्सो अबाउट फील्डिंग टू, कि आपको एक आधा कैच, हमारे पाकिस्तान के मैच में भी ऐसे हुआ, मोहम्मद रिजवान का कैच हुआ और वो आप एकदम ही आपका स्विच ऑन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एसेंशियल है टीमों के लिए, को सिर्फ वो बैटिंग बॉलिंग पे ही फोकस ना करें, फील्डिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छा करें, क्योंकि जब बॉलर आपके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं तो फील्डर्स का काम है को सपोर्ट ज़रूर करें उनको। Games are absolutely won and lost in the field just as much as they are with bat or ball in hand. South Africa, they escape
the jaws of a defeat against their bogey team in the Netherlands. Third time was a charm today. They got the job done with a 4-wicket win, 7 balls remaining. Congratulations to the Proteas. But in the early hours of this morning, I can tell you we have 3 games to look forward to today. Of course, Pakistan time. And up first, well, it's the West Indies. The first time we've seen one of the home sides back in action since their win in the first match. They're up against Uganda, and that match is at 5:30 a.m. local time. Then, after a certain game happens, Roha, at 7:30 p.m. local time, we have a third game of the day, which will be happening from 10 p.m. local time. It is a long day, but of course, there it is, the big one, Roha. The Super Sunday The that Super we've all Sunday. been waiting for, and we can't wait to see, of course, all the Pakistan and India fans filling up those stands, and you know, we can't wait for our own little pre-show party. We can't wait to see the third match, though, that I was alluding to, which does start at 10 p.m. halfway through that match. Oman versus Scotland. That one is happening at 10 p.m. Scotland, they're off to a flyer in Group B, so if they win against Oman, they very really could be in with a good chance, Roha, to make the Super 8. Imagine if they beat England, because I've decided it's England and not Australia's spot they're taking. But Smart. I do have something else to announce. It's our J.Janelle Jamshed Winner Perfume Contest, and I can tell you Who's the lucky winner now? that the winner today is, come on everyone, drum roll. Thank you for playing ball at this early hour. Congratulations to Serish. This is your perfume. This is coming your way. You answered the question correctly. First official international cricket match was held in 1844 between which 2 nations? Hafiz, the answer was? Australia and Canada. There you go. Well, Not congratulations. Australia. USA. checking you. I didn't want to call you up at this early morning. We I was tricked like, you. I'm sure it's USA. Professor just I tried to know test you. how she was happy on that. Oh yeah, Australia. I heard 3 it, a.m. and then the brain waves couldn't connect to the mouth to say it. I don't know if that's right because it's so early. Congratulations, Sarah. That is on your way. Thank you Well, so much. A long day at the office again tomorrow, as we know, a lot of back-to-back games, and of course it's Super Sunday, so India versus Pakistan. We're building up to all of that right here on PTV Sports. Gentlemen, thank you so much. Erin, thank you so much. It's time we go back, get some sleep and regroup before the all-important game tomorrow. Apna bahut khayal rakhiye, and thank you so much for watching Vantage Developers presents Game on Hay.